Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep YouTube channel. I'm Ashish Bhargav, and in this session we discuss about many important news, and as well as we can say which is relevant for the exam, and we covered all important news from all major newspaper covered in this session. And in this daily newspaper analysis, as we know that newspaper is very important for any aspirant who is preparing for the exam, and we can say in daily news analysis we discuss about national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, person and news, summits and conference, miscellaneous and national news. So basically newspaper analysis is required like many things, right? Now one newspaper, like you will see some news based on economy, some news is based on national, international and all. So basically we can say that apart from the news, the economy, international, national news, you will see we'll discuss about Supreme Court verdict, and that verdict is important. And second thing that we can say that in Supreme Court verdict and any state initiative, so that we also discussed in the newspaper analysis. So here's the quote of the day: if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. So to inculcate this thought process, you have to develop the temperament to read the newspaper. So here is study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in entire world. And we have taken questions of the day. So at the end of the YouTube session that we discuss about few questions, 3 to 5 questions hardly. Now, as we know that YouTube live session, the Pratham Test Prep mentors, so newspaper analysis that is taken by me at 11:30 am Monday to Friday, and legal darpan is taken by Sanjeet Bhatia at the 3 p.m. Monday, Wednesday and Friday, and current affairs samvad that is taken by Juhi Sharma ma'am, and that is from 8:30 p.m. and Hema ma'am that is taken by deep dive session at 3 p.m. Maths Mudda taken by Rahul Sharma sir at 11:30 am, and logical darpan is Girish Bhatt sir at twice a month, and boost your vocabulary session is taken by the 3 expert. So now moving further, see here is a very first news is what has the Reserve Bank of India, why has the Reserve Bank RBI introduced the e-rupee? Many times you will see in the article that RBI has announced the e-rupee. So the way you need to study the newspaper is that whatever the portion is highlighted, so you need to study only those portion. So what are the central bank digital currency? CBDC, that is another name is e-rupee. There is no difference at all, right? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड जो CBDC है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, उसी को हम e-rupee भी कहते हैं, ठीक है. और सेंट्रल बैंक से सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पे RBI का कंसर्न है, ठीक है. तो सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करती है डिजिटल करेंसी को टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच मीन्स वी कैन सी दैट एंड डिजिटल फॉर्मेट में जो कोई कॉइन होती है दैट इज नॉट टू बी क्रिप्टो करेंसी विल सच a move increase to risk of ban runs. So Reserve Bank of India this week launched the digital rupee on a pilot basis. The digital currency will be offered by a selected group of public and private banks. कैसे मिलेगी? सिमिलरली जैसे बैंक से आप पैसे लेते हो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होनी है, ठीक है. पहली चीज़ हम ये जानने की कोशिश करते हैं डिजिटल रुपी हमारी क्या होती है. सो इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज डिजिटल रुपी, सो अ डिजिटल रुपी और ई रुपी बोथ आर सेम थिंग, इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. हियर सेंट्रल बैंक विच मीन्स RBI इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऐसा क्यों किया कि RBI ने अपनी e-rupee लॉन्च करी? क्योंकि बहुत सारे लोग बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते थे. द टाइम फ्यू टाइम्स बिफोर टेस्ला ने ये चीज़ें बताई कि हम अपनी व्हीकल के लिए हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे. वन मोर कंट्री एज वी विल सी, एल सेल्वेडर इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच अनाउंस क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर. नाउ आई यूज सम जैगन इज लीगल टेंडर विच मीन्स लीगल टेंडर का मतलब होता है कि इन अ form of date, in a form of like returning to someone that we cannot deny it, ठीक है. तो वो हमारा लीगल टेंडर है. सो वी कैन से दैट इज सिमिलर टू फिजिकल कैश. जो e-rupee होगी सिमिलर टू फिजिकल कैश दैट यू होल्ड इन योर वॉलेट
except that the e-rupee is held electronically in a digital wallet overseen by the RBI. So we can say that ये आपका simply एक wallet के अंदर एक app type से होगा, उसमें होगा, and the digital rupee is recognized as legal tender by the RBI. RBI ने इसे लीगल टेंडर दिया. देखो आपने देखा होगा कि 8 नवंबर को जब मोदी जी ने डिमोनेटाइज किया था करेंसी को, तो ही सेड वंस कि लाइक जो हमारी करेंसी है वो 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे. सो लीगल टेंडर का मतलब होता है पूरे देश के अंदर कंट्री में आपको कोई भी इंसान उस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता. दैट इज़ नॉट टू बी अ लीगल टेंडर. बट अब कोशिश करो कि इसमें एक सिनारियो देता हूँ मैं आपको. आप गए आईफोन लेने के लिए और आप 1 लाख रुपीज़ दे रहे हो, उसमें 5-5 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. उसकी वर्थ जो है वो 1 लाख तो है, बट वो कॉइन्स हैं, तो 1000 इट मीन्स 1K तक आपको इंसान क्या कर सकता है, वो आपको एक्सेप्ट कर सकता है. आफ्टर दैट द पर्सन कैन डिनाई दिस, राइट. द पर्सन कैन डिनाई दिस. सो इन सिंपल एंड फॉर्म दैट वी कैन से, unlike deposits which are paid interest. So basically इसमें आपको ये देखनी होती है कि आपको 1000 रुपीज़ तक आपको मना कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद वो मना कर सकता है इस चीज़ के लिए. तो उसमें आपका वो लीगल टेंडर तो है, बट उसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है. सो अनलाइक डिपॉजिट्स विच आर पेड इंटरेस्ट, द डिजिटल रुपी इन योर वॉलेट आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट. ये ध्यान रखना कि डिजिटल रुपी का आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी आपको बैंक से. डिपॉजिट्स हेल्ड इन बैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल रुपी एंड वाइस वर्सा. So basically the RBI believes that digital rupee will make the rupee more attractive as a currency to users when compared to cryptocurrency. So if while we are talking about cryptocurrency, so cryptocurrency have been viewed by many investors as alternatives as a fiat currency. Fiat currency मतलब जिसकी values है, ठीक है, which progressive lose value over time due to debasement by central bank. Since such a trend could threaten their sovereignty, and central bank which means RBI have been trying to come up with their own digital currency. क्योंकि बाहर से लोग डिजिटल करेंसी को खरीदते तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए आरबीआई ने अपने खुद की करेंसी लॉन्च करी कि उसको ट्रैक कर पाना बहुत ईजी होगा. When interest rate offered by bank are low, people may be more prone to converting their bank deposits into digital currency, since they would not lose out much in the way of interest income by making the shift. और डिजिटल रुपीज़ could also play a crucial role in India ट्रांजिशन टूवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी, जिसकी जो हमारी अभी गवर्नमेंट की मोदी रिजीम में मेन चीज़ें बताएगी कि आपको इसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रमोशन किया गया. व्हाट डू द क्रिटिक्स से? द फ्यूचर ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मे ऑल्सो बी overblown. Private currencies have found demand among certain investors, not simply because they are digital, rather they are thought to be better stores of value, क्योंकि उसमें चुराने का जो होगा वो बहुत कम होगा. पीपल के नॉट स्टोल योर मनी एंड ऑल. Second news is, why has Fisher Folk protesting the Vizhinjam Port project? So in the construction of seaport aggravating coastal erosion along the Thiruvananthapuram shoreline. So what has the Kerala government response? So अगर हम देखें ये न्यूज़ में आपसे पूछेंगे आपसे कि ये पोर्ट है कहाँ पे, विजिंगम. सो विजिंगम पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? So Vizhinjam has been on the boil for the past 4 months with protest mainly fisher folks and the families laying siege to the under construction Vizhinjam Port. What lies at the heart of the protester? So according to protester, the port work has aggravated the coastal erosion along the coast of Thiruvananthapuram. They have raised 7 demands, which include a scientific study to assess the impact of the port work on the shoreline after stopping the construction of the port. Construction क्यों बंद किया गया? The reason behind, because a comprehensive rehabilitation package for the fisher work in the region and the assured minimum wage when the sea turns rough due to inclement weather. So Ministry of Environment and Forest ने नोट किया कि इरोशन इज मिनिमम ऑफ त्रिशूर, मैक्सिमम ऑफ तिरुवनंतपुरम, जो कि 23% है इवन फॉर द पोर्ट कंस्ट्रक्शन इन केरला केस. गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? द केरला गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट सिंस द कोस्टल इरोशन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एज रिपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज, द डिमांड फॉर स्टॉपिंग द पोर्ट कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड. मूविंग फर्दर,
थर्ड वन, फेथ एंड फ्रीडम. इस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं उसे हम डिस्कस करते हैं. सो फेथ एंड फ्रीडम. सो बेसिकली इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है. फेथ एंड फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड अंडर स्टेप कीप्स अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ. पहली चीज़ आपको देखने को फ्रीडम. सो बेसिकली राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये कौन से आर्टिकल में है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू डू? तो आर्टिकल इज, वी कैन से आर्टिकल 19 of the Indian Constitution, which clearly says that Article 19 of the Indian Constitution, which clearly says that right to free speech and expression. So, if you talk about protected litigation in the name of combating forcible religious conversion is taking up the valuable time of courts, the Supreme Court hearing is reported public interest litigation. Public interest litigation हमेशा public के against support में की जाती है. Make sure. And the Gujarat High Court had correctly stated Section 5 of the Gujarat Freedom of Religion Act 2003, जिसको अमेंड किया गया 2021 में, इंक्लूड कन्वर्जन बाय मैरिज, while also staying the operation of other provision that sought to cover interfaith marriage as instance of illegal conversion. The High Court had noted that prior permission of requirement would force someone to disclose one's religious belief or any change of faith, contrary to Supreme Court ruling that says marriage and faith involve an individual choice. So freedom of religion is protected only no questions are raised and no suspicion entertained based on the mere fact that an interfaith marriage has taken place. Common sense would suggest that forcing someone to disclose an intent to change one's faith violates freedom of conscience and right to privacy, जो कि हमारा आर्टिकल 21 में है, right to privacy. So on the larger issue of observation, Supreme Court bench ने इसको बताया कि Justice M.R. Shah to the effect that religious conversion through allurement or charity work is a serious problem indicate and eagerness to goad the government into coming up with anti-conversion measures on a national scale. So it is, we can say, questionable whether court should entertain exaggerated allegations or rampant fraudulent conversion across the country. सो बेसिकली इस आर्टिकल में आपको ये देखनी है कि व्हाट इज द मेन क्रक्स एंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज अबाउट राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, राइट. Now moving further to the next one. The next important news is here, we can say okay, MPs and MLA have special rights to free speech for a valid reason. Basically, this article is talking about is member of parliament and member of legislative assembly. So it is a depressing sign of times that, you know, member of parliament and other legislature are generally not held in great public esteem. However, public disclaim and cynicism about elected representative must not color our understanding of constitutionally protected and privilege. So we have to think about the legislature, in particular their free speech and rights. These rights and privileges are established essential bulwark of liberty and democracy. So what is the Indian Constitution enshrined for this? So under our Constitution, all Indian citizens enjoy free speech subject to reasonable restrictions under Article 19, which we have already discussed in the previous article. But the speech of MPs and member of Legislative Assembly and member of Parliament is particularly protected under Article 105. See, this is the difference. 105 and 194 as a parliamentary privilege subject only to provision and constitution and standing orders to such a legislature, like MPs cannot publish in connection with any voter of speech made in parliament. So we can say that in simple terms, like MPs and MLAs, because there are some kind of decorum they need to maintain it, because आपने देखा बहुत सारे like sometimes like they people used to speak like reverie culture and all, so you cannot speak.
सच वर्ड्स अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के डेकोरम में ये चीज़ें मेंशन की गई कि आप इस टाइप की वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट. So free speech of parliament has been protected for a longer than free speech generally. So indeed the history of protection under common law is history of how power has been brought on account of democratic setup. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल. आपको ये समझने कि इसमें आर्टिकल जो एमपीज एमएलए को फ्री स्पीच दी गई है उसमें ये आर्टिकल हम जो आपको एक आम नागरिक को जो एक नॉर्मल सिटीजन है हमारे कंट्री का, ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, एमपीज और एमएलए को आर्टिकल 105 एंड 194 में दी गई है. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन. इंडिया जर्मनी लिंक पैक्ट ऑन माइग्रेशन, जयशंकर डिफेंस बाइंग रशियन ऑयल. सो इंडिया का कंजम्पशन जो है रशियन ऑयल का जस्ट 1/6 ऑफ यूरोपियन कंजम्पशन. मेक श्योर इसका जो 1/6 ऑफ यूरोपियन कंजम्पशन एंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड अनफेवरेबली. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक्स जयशंकर ने बताया कि इन हिज टॉक विद विजिटिंग जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी जो कंट्री है ऑब्वियस है कि नेक्स्ट ईयर इन 2023 द G20 समिट्स इंडिया इज गोइंग टू होस्ट एंड so at the end of talks India and Germany signed a comprehensive partnership on migration and mobility meant to ease travel for research. So what was the earlier concern of India Germany? So we need to find it on the background. So as we know that Germany established the Consulate General in Mumbai in 1951, leading to the establishment of full-fledged embassy in New Delhi in 1952. India and Germany maintain a strategic partnership since 2001. May 2000 में both countries adopted the agenda for the Indo-German partnership in 21st century, which includes regular meeting of both heads of government as well as annual meeting of the foreign ministers. Why Germany-India convergence? Because the reason behind Germany consider India is the pillar of Asian stability and country that shares European political values, equality, liberty, fraternity and democratic value. This is all about the crux of the passage. Moving further, the next article is Sri Lanka seeks India's help to boost dairy output. So basically in this article, in a bid to scale up its dairy production to become self-sufficient, Sri Lanka has sought technical assistance from India National Dairy Development Board (NDDB) and market leader Amul, reviving a collaboration that the island attempted in the late 1990s but failed to take forward. So basically, the article is talking about like Sri Lanka seeks India's help to boost dairy outputs because both is a neighboring country. And apart from India, Sri Lanka is exploring greater collaboration with New Zealand, its main source of dairy imports, for 4 decades now. According to a Colombo-based official New Zealand dairy cooperative, Fonterra has in recently year expanded its Sri Lanka businesses. It has been building partnership with Sri Lanka farmers and is considering how to expand them when conditions allow, the official said. So now moving further to the next one. PMI signals unbeat services overseas orders post revival. So basically the service sector continued to be rebound in November, logging its fastest output growth in 3 months as new orders occurred at the highest pace since August as per the S&P Global India Services Purchasing Manager Index, which rose in 56.4 to 55.1 in October. इसमें क्या हुआ है कि जो इनपुट कॉस्ट था रोज एज सेकेंड फास्टेस्ट रेट सिंस जुलाई, विच कंपेयर प्रोवाइडेड टू रीच चार्जेस टू कंज्यूमर एट द स्टीपेस्ट रेट इन 64 months. So we can say that service business remained buoyant as demand for contact intensive activities gained momentum. और जो न्यू बिजनेसेस हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट अपस्टिक इन नवंबर सिंस द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 इन अर्ली 2020, इवन दो ओवरऑल रेट ऑफ एक्सपेंशन इन न्यू ऑर्डर्स वाज माइल्ड. So demand buoyancy along with sharp improvements in business confidence lifted job creation with new employment rising at a solid pace that was among the quickest in over 3 years.
Moving further, now it's time to questions of the day. So guys, आज के articles जो थे that was not up to the mark for CLAT and UT exams. That's why there was a few articles that was based on that. Now it's time to questions of the day. And why the questions of the day is important? Because the reason you have to develop such kind of temperament which is important for the questions of the day. Now here is the very first question. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% of central government and 20% of the state government. The central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state government. Third one, as per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take the central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. What of the statement given above is our correct one? So obvious that we can say that all the statement is not correct. Answer C. FRBM review panel had recommended the criterion of debt as a parameter for fiscal responsibility. जो सेंट्रल बैंक शेयर करती है 40% है, स्टेट करता है 20%. Also in terms of domestic liabilities, the figure are actually reverse. The central government 49% and state is 21%. And Article 293 Clause 3, a state may not without the consent of the government of India raise any loan if there is still outstanding any part of loan which has been made to the state by the government of India or its predecessors government or in it. So basically answer would be here C1. Next is talking about NPCI, National Payment Corporation of India. So statement 1, if you talk about, is an initiative of the Reserve Bank of India and Indian Bank Association IBA under the provision of Banking Regulation Act 1949. It has developed the National Electronic Toll Collections NETC program to meet the electronic tolling requirement of the Indian markets. जितने भी ATM से आप कैश निकालते हो इनको मर्ज करने का काम, इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है हमारे कंट्री के अंदर? वो करता है हमारा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो उसके ऊपर स्टेटमेंट है. टेक योर टाइम एंड फाइंड इट आउट व्हिच कैन बी द पॉसिबल आंसर. So we can say that the answer will be here B. National Payment Corporation of India NPCI is an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India. It is an initiative of RBI and Indian Bank Association IBA under the provision of Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. NPCI has developed the National Electronic Toll Collections NETS program to meet the electronic tolling requirement of the Indian market. Moving further to the third one question, UPI. The full form is UPI is Unified Payments Interface. So statement 1 is asking about UPI. It is an instant real-time payment system jointly developed by National Informatics Center NIC. जो आप वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि cbsc.nic.in, तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी है NIC, विच इज़ फुल फॉर्म इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट. तो इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट आप या तो देखेंगे आप GOV वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. ये डोमेन आप कोई एक आम इंसान परचेज नहीं कर सकता,
इफ माई नेम इज आशीष एंड इफ आई से ashish.gov.in, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं दे हैव ओनली अलाउड टू परचेज द डोमेन लाइक GOV, लाइक MHA.gov.in। MHA क्या है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस.gov.in। GOV.in, NIC.in इसको आप परचेज नहीं कर सकते। NIC क्या है हमारा, इंडिया का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC। CDAC बेसिकली हमारे इंडिया में जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं इनके पास ये डेटाज होती हैं। It caters to peer collect request which can be scheduled and paid as a requirement and convenience. Which of the statement is a correct one? So if you talk about NIC, तो UPI के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि UPI क्या इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको NIC और CDAC करती है, एंड इट्स अ पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट। सो ऑब्वियस अगर हम देखें तो स्टेटमेंट हमारा बी करेक्ट है इसमें, एंड बी अगर पूछो बी करेक्ट क्यों है, रीज़न क्या है हमारा, ओनली सेकेंड वन, क्योंकि उसको डेवलप जो है वो NIC और CDAC नहीं करती, तो कौन करता है फिर, UPI को। इट हैज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, इसको NPCI करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस, द इंटरफेस, जितने भी हमारे बैंक ATMs होती हैं हमारे कंट्री के अंदर उनको भी मेंटेन करने का काम कौन करेगी कंट्री में, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फैसिलिटेट्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस, द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्क फॉर इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। इट ऑल्सो caters to the peer-to-peer collect requests which can be scheduled and paid as per the requirement and convenience. And third one is Bureau of Indian Standard, BIS, is a national standard body supported by, आपने देखा जब आप गोल्ड लेने जाते हो या सिल्वर लेने जाते हो तो यू विल सी आपको यहाँ पे लिखा होता है ना कि हमेशा BIS मार्क देख के ले, हिंदी में भी लिखी होती है, इंग्लिश में भी लिखी होती है एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो ये ब्यूरो ऐसा नहीं है कि ओनली गोल्ड सिल्वर और इन चीज़ों पे ही होती है, मेटल पे ही, बाकी चीज़ों पे भी BIS होता है, विल डिस्कस अबाउट। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो फर्स्ट क्या है हमारा, ये ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी फॉर इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द BIS एक्ट 2016। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट। द मेन एक्टिविटीज आर स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। BIS responsible for developing Indian standards, implementing voluntary and mandatory standards such as quality control orders and providing quality assurance to consumers. So guys, this is all about the session. So I hope you enjoyed the session a lot. If you are new in this channel, please subscribe the channel as well. Do not forget to press the bell icon, right? And if you have any questions, please let me know in the comment section as well. Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow at the same time at 11:30. Stay tuned. Bye bye and take care. अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें.